बॉलिंग के पहले आप क्या एटीट्यूड होल्ड करते हो? मुझे पता है कि मैं टीम को क्या फायदा दे सकता हूँ। वो एटीट्यूड मेंटेन करने के लिए यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड इन द ऑफ सीजन। वो एटीट्यूड वहाँ से बिल्ड होता है और वो नेचुरली डेवलप होते जाते हैं। इवेंचुअली आई ऑल्सो डिड नॉट प्ले गुड क्रिकेट। दे टोल्ड मी दैट कि यस अभी तेरा हो गया है यार। कितना डिफिकल्ट है एज अ फास्ट बॉलर टू सस्टेन देयर। वी नो दैट कि कितना चैलेंजिंग होता है एवरी गेम, और एवरी गेम में आपको परफॉर्मेंस भी उतना देना है। सो इट इज नॉट इजी। हेलो देयर एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है विच कंबाइंस ऑफ स्किल्स, पैशन एंड bowling especially is a very crucial part of cricket, right? You need strength, you need mental toughness, and today I have a very special guest, Mohit Awasthi, who is a right arm fast bowler. So firstly, Mohit, welcome on Catch Up with Kiara. Thank you so much, Kiara, for the lovely introduction. So firstly, I want to tell you, I really admire your bowling. I've seen you bowl, and I was like, oh my god, कितना अच्छा bowling करते हो आप. So I want to ask you कि what inspired you to get into cricket, and who was your favorite cricketer when you started? Basically, whenever I started cricket, it came from a childhood because every family have a dream that ki my son should play for India. Correct. So something like in our family also, they think like ki I should play for India, but we have a certain family background was not as per the cricket concern. Correct. So I started cricket in my society and just following my dreams and all this stuff. But after some time, it's like you know that you have ability, but you don't have a direction to go how to reach that goal. Correct. So somehow I started my cricket in the late. So I start from my college career. I studied in Thakur Samnarayan Vidya in the Correct. college, and I started there and as a professionally. And then after that I get to know that कि क्या क्या requirement है, means I have to play for a bigger level. Correct. So मुझे क्या क्या उसके लिए क्या मेरे पास information चाहिए, क्या मुझे data चाहिए, so I can push myself forward. And apart from at the start of my growing structure and playing for a cricket for a longer time, I admire a lot of players like Sachin Tendulkar, Rahul Dravid, and that they are all legends. So I love to follow them. But as a bowler, it's always someone who really stood me is Ishan Sharma and James Anderson. I love to follow James Anderson many a time in action also, but I'm a biggest fan of his. Correct. I have heard that you strongly believe in visualization, affirmation, and hard work. Why so? What made you believe in these three things, and how has it helped you in your career? That's a good question you asked me. You know that some stage of kind of performance you needed, you have to believe in yourself first rather than someone will believe in you. So that's why that's the thing I always kept in my mind and always work on that. And apart from affirmation, it's like that I already did not play any age group cricket like under 19, under 23. Correct. So that platform I don't have. So apart from that, the around whatever the surrounding in myself, they are not believing in my abilities, and they told me that कि yes अभी तेरा हो गया है यार, just अभी तू क्या तो लोगों करेगा. का काम है Yes. कहना. Correct. That's the thing. But somehow I know that I have ability to perform well in the good level. Correct. And that's the thing is always motivated me. So वो एक चीज को है ना मैंने अपने ट्रेनिंग पर्पस और अपने रूटीन लाइफ में मैंने अडॉप्ट कर लिया. Correct. सो सम वट एवर द चैलेंज विल कम, आई जस्ट मेक श्योर दैट कि आई विल कम ओवर अगेन एंड अगेन. सो दैट्स द थिंग विल मोटिवेटेड मी अलोंग विथ माय जर्नी. करेक्ट. एज यू सेड कि लोग ऐसे कहते थे, वैसे तो ऑब्वियसली लोगों का काम तो है कहना, बट Right. दैट मेंटली ऑल्सो दैट इज वन थिंग विच अफेक्ट्स यू, एंड फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन मेंटल टफनेस, it's a very neglected subject. What would you say about that? Eventually, I also did not play good cricket when I have a ability and skill. That time, Ups and downs. Yeah, ups and downs. Correct. So that time, you have to be mentally strong because the situation and challenges you are facing, it's commendable because you have to face it. Because I love the game, I never say that कि मैंने बहुत struggle किया मेरे, Correct, हाँ. और मेरे को ये चाहिए था, मेरे को ये नहीं मिला, मैं बहुत struggling cricketer हूँ.
बट मैं वैसा कभी अपने आप को कंपेयर नहीं करता Hmm. बिकॉज आई लव द गेम, Hmm. so I am passionate about it. Correct. So you can find out the Hmm. situation, whatever the situation. If situation are difficult, the things going around you, Hmm. it will automatically reflect. Correct. By the time you are practicing with mental condition also, because a lot of things going around you, sometime तेरा आपका selection होना कभी नहीं होना, Hmm. तो it's always a challenging for as a sportsman. Correct. So तो आसपास के लोग आपके बारे में कैसा बात कर रहे हैं और क्या आपसे जानना चाहते हैं Hmm. और आपका एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है. True. सो ये सब चीज से ना मेंटल प्रॉब्लम्स तो बहुत क्रिएट होती है इन फ्यूचर भी. और ये बहुत बड़ा मतलब अभी कंसर्न है, मतलब आजकल के जनरेशन्स के लिए भी, और इवन फॉर मी, क्यों मैं भी एक लर्निंग प्रोसेस में हूँ. Hmm. सो ये एक True. जो भी चीज है उसको मैंने बाय द टाइम ओवरकम कैसे किया. डोंट थिंक टू मच अहेड. जो मेरे हाथ में है राइट अवे, जो मेरे पास है मैं उसमें बेस्ट कैसे दे सकूं, Correct. और ट्राई टू गिव माई 100% and not think about the result. I just follow the process. Correct. That's a very good thing you actually said about mental toughness. There's something else also I want to ask you about mental and physical. Now, अभी आप bowling चालू कर रहे हो. Bowling के पहले आप क्या attitude hold करते हो? Like अरे मैं तो भी ऐसे तोड़ दूंगा, मैं ऐसे कुछ. नहीं नहीं नहीं, nothing like that कि तोड़ दूंगा. I just love to bowl though. Just I do my routines first of all, whatever it is. And apart from that, when I go to the competition, I know that कि what is my role. Correct. फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज मेरे बॉलिंग से मुझे पता है कि मैं टीम को क्या फायदा दे सकता हूँ, एंड आई ट्राई टू डू दैट. वो एटीट्यूड मेंटेन करने के लिए यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड इन द ऑफ सीजन. it will start from the off season, not in the competition level. So वो एटीट्यूड वहाँ से बिल्ड होता है और वो नेचुरली डेवलप होते जाते हैं. Correct. सो हमेशा मैंने जब भी बॉल हाथ में लिया है तो मेरा माइंडसेट वही रहा है कि मैं टीम को अपने आप को कैसे जिता सकूं, और ट्राई करूं कि मैं कोई भी सिचुएशन से टीम को क्या बेनिफिट दे सकूं. सो वो चीज का मेरा बहुत ज्यादा फोकस रहता था, तो जिससे मेरे गेम में भी बहुत फर्क गिरा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो थोड़े टाइम के बाद लोगों को रिफ्लेक्ट होने भी लगा. ओके. लाइक दिस वन मोर थिंग. अभी मेरे को तो ऐसे बहुत ऐसे क्वेश्चंस है क्रिकेट रिलेटेड, आपसे बेटर है पूछना. चैलेंजिंग विकेट तो बहुत ऐसे आते होंगे आपको, क्या क्या होता होगा वो टाइम पे, वैसे सिचुएशन में क्या करते हो आप? चैलेंजिंग विकेट्स अपार्ट फ्रॉम अभी तो T20 एंड ऑल दिस, यू नो दैट कि कितना डिफिकल्ट है एज अ फास्ट बॉलर टू सस्टेन देयर. बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू लर्न एवरी डे. वी नो दैट कि कितना चैलेंजिंग होता है एवरी गेम, और एवरी गेम में आपको परफॉर्मेंस भी उतना देना है. सो इट इज नॉट इजी. फर्स्ट ऑफ ऑल दो वी कैन एक्चुअली हम लोग डिवाइड कर लेते हैं कि अपने आप को कि कैसे करना है, गिवन डे पे परफॉर्म कैसे करना है, हाउ टू मेक्स माई मेंटल गेम दैट कि आई एम अहेड विथ whatever the opponent I will face. Correct. I will make sure that I will break them and go ahead with them. Correct. Whenever start the game, we try to bowl couple of overs, then get to know about how the condition and situation of the wickets, how the wickets is playing such role, and then we decide कि अभी ये wicket पे हमें किस तरीके से bowling करना है. Then we plan out and we do the things like that. और फिर ट्राई करते कि वो एग्जीक्यूट करें और उसका रिजल्ट और उसका आउटकम टीम को फायदे में लेके. Now you've already given so much information about your experience and everything, but there are like a lot of budding cricketers who are just getting into this field. वो छोटे छोटे बच्चों को क्या आप बोल सकते हो with so much experience you've come across? Firstly, I am also young only. मतलब छोटे छोटे से like 10 year old वो just starting off. एक्चुअली कैसा रहता है ना, अभी का जो जनरेशन है इट्स लाइक अ रिजल्ट ओरिएंटेड. आई थिंक लोगों को वर्क एथिक्स एंड अपने प्रोसेस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए एज ए अपकमिंग यंगस्टर. क्योंकि कैसा होता है ना कि एक एज ग्रुप के बाद अगर अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16 में अगर नहीं होता है तो दे आर लाइक टू गिविंग अप. सो वो टाइम पे ना अपने आप में एक ट्रस्ट होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ स्पोर्ट्स पर्सन. तो वहां से आपका एक मेंटल जो एक्सेप्ट है आपने बोला चाहिए कि ग्रोथ होना चाहिए, तो वहां से ग्रोथ होना चालू होता है. अभी के जनरेशन में लोग बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए, प्रोसेस पे लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते. ट्राई टू इम्प्रेस एवरीवन कि आज मैं ये करता हूँ तो लोग इम्प्रेस होंगे ऐसा कर. सो आजकल का वो जनरेशन हो गया. तो आई पर्सनली थिंक लाइक कि रेदर देन थिंकिंग टू मच अहेड, जस्ट फोकस जो भी आपके हाथ में आप जो कर रहे हो उसको 100% करो
और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप स्ट्रगल पीरियड में हो और आपको मजा आ रहा है वो करने को, सो यू मस्ट बी अ सक्सेसफुल पर्सन दैट टाइम. That's a very good thing you have said. अभी सब अब ऑडियंस को बताओ आप क्या करने वाले हो आप. Now what is coming up with Mohit Awasthi? Mostly people knows that ki how far I had played and Hmm. what the season gone around. But yeah, I focus on the next level right from here, but not too much expectation for Correct. myself and others. Think, yeah, I will give my best Hmm. and hope for the upcoming challenges, and Hmm. hopefully I play for India soon. Fingers crossed. Yeah. So I saw that you missed out the Ranji Trophy finals. So how did you feel? Because obviously Mumbai jeeti, but you were not there in the team. How did you feel? It was a tough night because I was injured that time. Correct. But it's really hard to me to did not play for a final because Hmm. I already played one final and we lost that. But this time we know that we have a good team and we will beat any team at the time of competition. But I miss out the final. The moment was very difficult to me. But after winning and lifting the cup, it's all gone wrong.